Hello everyone, welcome to Fitness Beauty. I hope you're doing well. Today I have brought another amazing product to review and unbox with you, जो कि है battery operated eyebrow trimmer. This is an amazing product, a handy product which I believe every lady needs on the go. So before any further ado, let's open it and see what's inside and how we have to use it. So ये बेसिकली एक USB चार्जिंग केबल है इसके साथ. This is a cleaning brush and this is the main head, that's the shaver head, the bigger one, and this is a pen. Sleek सा न्यू डिज़ाइन है. इसको आप पेन की तरह ऊपर से ओपन करें और ऑलरेडी ये एक स्मॉल अटैचमेंट इसमें लगी हुई है. और down here you can see the cable port. So इसके बोथ फंक्शंस हैं. आप इसमें बैटरी भी इंसर्ट कर सकते हैं और चार्ज भी कर सकते हैं. So best option is to charge, to save on batteries. So how it works, आप जब just इसको push करें above, you can see the light indicator, that means it's on. So I'll just show you how it works. So what you have to do, you have to go to the opposite direction जो आपकी hairs की growth है. थोड़ा सा मैं आपको close करके दिखा रही हूँ, so you can see. You just have to go on opposite direction. Let's see, these are your eyebrows. So you just remove, like you are just using a pen or pencil, and it goes like that. It's not hurting you, it's not bothering you on your skin. Just a simple small strokes में इसको आप यूज़ कर सकते हैं इस तरह से. ना सिर्फ ये आप आईब्रोज पे यूज़ कर सकते हैं, अगर आप इसको हैंड्स पे या अपर लिप्स या साइड बर्न्स भी यूज़ करना चाहें तो आपकी अपनी मर्ज़ी है. कुछ लोग तो पसंद करते हैं यूज़ करना, कुछ लोग नहीं भी करते, शेविंग थिंग, बट पीपल आर डूइंग, सो इट्स योर चॉइस. सो आप इसको ऑफ़ करें यहाँ से सिंपल. अगर आपने इसका हेड चेंज करना है तो सिंपली यू जस्ट हैव टू रिमूव द अपर पार्ट. यहाँ से अपर पार्ट रिमूव करके ऊपर से आप इसको दूसरी अटैचमेंट इसके साथ लगा के, तो उसके साथ आप बिगर एरिया लाइक हैंड पे यूज़ कर सकते हैं या फेस पन्स पे यूज़ कर सकते हैं. यू जस्ट हैव टू डू लाइक दैट. सो यस, इट वाज दैट सिंपल. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी. इफ़ यू वांट यू कैन ट्राई. And please give thumbs up and subscribe to for more exciting videos, and stay tuned. Bye for now.